हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद है आप सब जा होंगे, खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल पेशावरज़लमिरेक्शन में खुशामदीद कहते हैं। आप जो है आज की वीडियो जो है टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो जो है इंडिया और टर्की के जो मिलिट्री कंपैरिजन है उस पर जो है आज रिएक्शन देंगे। सो वीडियो जो है बहुत जबरदस्त और धमाल की होने वाली है। बहुत जबरदस्त। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाए वहां पर भी वीडियो देखे और यहाँ पर भी रिएक्शन को एंजॉय करें। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को जल्द मिल सके। सो वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त ज़ाय किए। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 एंड लेट्स गो। Hello everyone. Today in this video we are going to compare the military and economic aspects of India and Turkey in detail. Let's get started. First, coming to the number of active military personnel of both the countries. India currently has over 1.4 million personnel, which is ranked second in the world. Turkey, on the other hand, has 355,000 active military personnel. Now, coming to the reserve military personnel, India has over 2 million, and Turkey has 378,000 plus reserve military personnel. Now let's compare the GDP. India's GDP nominal at present is 3,000 billion US dollar, whereas Turkey has around 700 billion US dollar. Defense budget comparison. India spends about 67 billion US dollars and is the fourth largest in terms of military spending, whereas Turkey spends around 19 billion US dollars. In this context, both India and Turkey still depend on huge foreign imports of military hardware. Land power comparisons. India currently has 4,800 plus active main battle tanks, which includes Russian-made T-72 and T-90 and indigenously built Arjun tank. On the other hand, Turkey has 2,500 plus tanks, the majority of which are modified versions of US-made M60 and M48 patent tanks, and a sizable number of German-made Leopard. Turkey is also planning to introduce indigenously built Altay MBT in its inventory soon. In addition to this, India has 2,800 plus armored fighting vehicles, as compared to Turkey's 9,000 plus armored fighting vehicles. 4,000 plus towed artillery, as compared to Turkey's 1,200 plus towed artillery. 200 plus self-propelled artillery, as compared to Turkey's 1,100 plus self-propelled artillery. And 260 plus multi-launched rocket systems, as compared to Turkey's 300 plus multi-launched rocket system. In addition to this, India has land-based intercontinental ballistic missiles, which can reach up to 8,000 kilometer range, whereas Turkey doesn't have any ICBM at the moment. In the near future, both the countries are planning to modernize their land-based equipments and adding more indigenously built equipments. Air power comparisons. India currently has around 2,100 plus total aircraft, out of which 570 plus are fighter jets, which includes modern fighters like Su-30 MKI, MiG-29, HAL Tejas, and recently introduced in Indian Air Force, Dassault Rafale. Turkey has around 1,050 plus total aircraft, out of which 240 plus are fighter jets. Currently, F-16 is the only main fighter jets of Turkey. Helicopters, India 700 plus, Turkey 500 plus. At the moment, both India and Turkey are building its own stealth fighter jets, which both the countries are planning to introduce by 2025. Naval power comparisons. India has total 300 plus naval ships, which include both warships and auxiliary ships, which is fairly large. And Turkey has a total 190 plus naval ships. Aircraft carriers. India currently has one active aircraft carrier and another one under development, which is going to enter sea trial soon. Turkey has no aircraft carrier at the moment. Destroyers. India currently has 11 destroyer ships. Turkey has no destroyer at the moment. Submarines.
India currently has 20 submarines, whereas Turkey has 12 submarines. Frigates. India at the moment has 14 frigate ships as compared to Turkey's 16 frigates. Corvettes. India currently has 23 corvette ships, whereas Turkey has 10. Thanks for watching. वीडियो तो हम लोगों ने देख ली जो है इंडिया के जो थे वो तो पहले जो है इंडिया के मिलिट्री पर्सनल जो है आर्मी पर्सनल है, चाहे वो एक्टिव हो या रिजर्व हो, वो जो है टर्की से जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के जो है 1.4 मिलियन आई थिंक जो है वो एक्टिव पर्सनल है और टर्की के जो है इसके मुकाबले में जो है बहुत कम है। फिर जो है टैंक्स की या एयरक्राफ्ट की या जेट्स की जो कंपैरिजन हुई है उसमें भी जो है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आगे है। और ये टाइम के साथ साथ जो है इंडिया और भी जो है बहुत एक्सपेंड जो है अपनी जो है वो डिफेंस सेक्टर जो है, क्योंकि वो जो है अभी जो बजट में जो है डिफेंस सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रखती है। तो मेरे ख्याल से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और भी जो है अपने डिफेंस सेक्टर को जो है और भी बूस्ट कर रही है और डिफरेंट जो है कंट्रीज जो है उनको जो है वो डोमिनेट कर रही है। ये बात भी है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखी जाए कि तुर्की जो है वो डेवलपमेंट में धीरे धीरे इंडिया को भी पीछे छोड़ रहा है। मेन मसला हमारा ये होता है ना कि हम जो है वो मिलिट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे जो कंट्री के बहुत ज़्यादा सेक्टर है वो उनको वो जो है नीचे रह जाते हैं। अभी अगर हम बजट सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर के वो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी कहा कि हमको ये चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्योंकि एक मुल्क जो अपनी मिलिट्री पर इतने ज़्यादा लगाती है उसके पास अपने लोगों पर खर्च करने के लिए नहीं बचता है। नहीं तो इधर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो LOC हो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो दोनों कंट्रीज जो है वो डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और बहुत ज़्यादा फंड जो है वो मिलिट्री पर जो है लगा रही है। इसके बरकस अगर एजुकेशन को देखें या और डिपार्टमेंट्स को देखें तो वहाँ पर जो है फंड जो है ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन फंड्स वहाँ पर जो है ज़्यादा मुहैया नहीं होता। सो वीडियो में तो हमने देख ली कि जो है इंडिया अपने जो डिफेंस सेक्टर उसको और जो है वो बूस्ट कर रही है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि उनके और जो सेक्टर है कि वो जो है कितने ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। सो इंफॉर्मेटिव वीडियो की हमने जो है बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर भी रिएक्शन होगा।